Hello students, your CBSE board class 10 AI exam is on 27th February and there is only one day gap before your science exam. So you have very less time for this preparation. इस पूरे preparation के लिए now only 1 month is left before your exam. Uh, ये पूरा कोर्स मटेरियल एआई आपको क्लास 10 एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेपर में आपको फुल मार्क्स लाने में आपको हेल्प करेगा। इसमें पूरा कोर्स मटेरियल, इसमें आप जानते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के चैप्टर्स हैं और साथ में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स हैं। सो आज हम इसका क्या करते हैं कि आज इसका जो कंटेंट है, रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल। इसके अच्छा, ये तो सीबीएसई है तो इसमें चले जाते हैं। इसमें आपको हर एक चैप्टर्स का एक प्रोजेक्ट वीडियो, साथ में पीडीएफ, क्विज टेस्ट है। तो हम रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट पीडीएफ, दिस एआई प्रोजेक्ट साइकिल का पीडीएफ से हम इस चैप्टर को आज पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप इस पूरे कोर्स मटेरियल को लेना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे चले जाइएगा। तो ये है, इट्स वेरी चीप, so just for 499, but it will help you to score full marks in your AI exam. So let's see this entire content, what is there in this chapter. So the first is the recap of AI project cycle. Explore AI domain and their application, understand ethical frameworks for AI, learn about bioethical principle. ये नया ऐड किया है तो आप इसको देख सकते हैं, इसको थोड़ा जान सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। आप एक बारी इसमें ऐसा है कि बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, अप्लाई फ्रेमवर्क थ्रू रियल लाइफ केसेस। तो जो ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम ये टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल। देखिए, जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, ठीक वही है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम स्कोपिंग, जहां हम जानते हैं क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, उसमें कौन कौन से 4 W's उसको क्रिएट करते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर। ओके, सो उसको जानते हैं। डेटा एक्विजिशन में हम डेटा को एक्वायर करते हैं, डेटा एक्सप्लोरेशन में उस डेटा से पैटर्न लेते हैं, मॉडलिंग में हम वो एल्गोरिदम सिलेक्ट करते हैं जो इस डेटा से हमको प्रिडिक्शन दे सके, और इवेल्युएशन में फिर उस मॉडलिंग को हम टेस्ट करते हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग? ऑब्वियसली इट इज द डिफाइन द प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, सेट द गोल्स, उसके क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट आउटकम्स आने चाहिए। ठीक है, और क्या व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिडिक्ट रेनफॉल, डिटेक्ट स्पैम, डिटेक्ट बैंक फ्रॉड। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, so that is what we need to know in problem scoping. Data acquisition, we need to collect reliable, authentic data from multiple sources. And here also हमको देखना पड़ता है कि जो सोर्सेज है वो ऑथेंटिक है, रिलायबल है, और डेटा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को चाहिए। इफ वेरी लेस डेटा इज देयर, still we cannot able to get the proper prediction and obviously correct data. For example, gathering medical records for disease prediction. इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, डेटा एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे हम डेटा में विजुअलाइज एंड एनालाइज डेटा टू फाइंड पैटर्न्स, वी गेट द पैटर्न्स। इसके लिए हम चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल करते हैं, डिटेक्ट एरर्स एंड मिसिंग डेटा, एंड हेल्प्स सिलेक्ट अप्रोप्रिएट एआई मॉडल। और इसमें थोड़ा ये हेल्प भी करता है कि कौन सा हम एआई मॉडल इसके लिए सिलेक्ट करें। मॉडलिंग बेसिकली ट्रेन करता है एआई मॉडल। इन ड्यूरिंग दिस वी ट्रेन द एआई model with the test data. Then we choose the best performing model and we develop an algorithm around the model. For example, image recognition model. So basically यहाँ पे हम उस एल्गोरिदम्स को देखते हैं, जो एल्गोरिदम उस डेटा से हमें हमारे आउटपुट तक पहुंचने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द इवेल्युएशन। नाउ इवेल्युएशन इज द टेस्ट मॉडल यूजिंग न्यू डेटा।
ओके, सो हियर वी, जहाँ मॉडलिंग में हम टेस्ट डेटा लेते हैं, यहाँ ट्रेनिंग डेटा लेते हैं, वहां पे यहाँ इवेल्युएशन में हम टेस्ट डेटा लेते हैं। तो ये अननोन डेटा होता है, तो इससे वी चेक बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर, और also we identify the errors and reduce the bias. Okay. Okay, the next is the domains of AI. So आपने पहले ही पढ़ा होगा, we can basically divide in three is statistical data. ये नया टर्म है, इसको डेटा साइंस भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ नंबर और एनालिसिस होता है। कंप्यूटर विजन, ऑब्वियसली वी यूज इमेजेस, वीडियोस, ओके, टू गेट दिस थिंग, एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टेक्स्ट एंड स्पीच से रिलेटेड है। Statistical data basically is the last set of data. Today there is a lot of data, price comparison, websites, stock market analysis, recommendations. Mostly जहाँ recommendation हो रहा है, तो basically they take the data patterns on based on this data, right? So these are the computer vision is basically enables machines to see, understand and interpret images. Okay, so agriculture, crop monitoring using drones, security, healthcare, convert visual data. So this all comes under computer vision. Then we have NLP. NLP is basically to understand and respond to human language. So machine can interact with the human language. तो इसमें आपका email filters, machine translation, chat bots, these are all coming. So email filters basically आप सभी के emails में जब spam email आता है तो machine आपको it tells you that this is a, आपका जीमेल में पता चल जाता है ये स्पैम है कि नहीं, मशीन ऑटोमेटिकली गिव यू हेल्प। देन ट्रांसलेशन, वन लैंग्वेज टू अदर ट्रांसलेशन, एंड चैट बॉट्स एंड वॉइस असिस्टेंट विच आर देयर। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेमवर्क्स। नाउ व्हाट इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क? सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें, प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। ओके, प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी। ओके, टू गेट टू बेसिकली हम AI project cycle itself is a framework. So एक step by step procedure to reach the final product is basically is the framework. Basically, it's a structured way of solving a problem. Then what is ethical framework? So basically, ethics are the values. So AI जो decision लेते हैं, तो basically AI should be fair, unbiased, and beneficial. Or AI के, for example, we are creating a software for recruitment system. So it should not do unintended harm to people, like it is biased towards some type or category of the people in recruitment. So these are all the programs. So machine, we can do this thing. हम AI को अंदर इस तरह का डेटा दे कि it will be giving in favor of someone, okay, of a particular category, then it will consider them uh, over others. ठीक है, तो ये हो गया आपका ethical framework. So basically this is also, but here ethics we will consider during the process. अच्छा, why do we need? We have already discussed it prevent biases and transparency and accountability. So basically it promote trust and fairness in AI solution. So people will use the solution only if the this solution is transparent. People will know on what criteria it is going to take the decision. टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क। नाउ आपके दो तरह के एथिकल फ्रेमवर्क है, एक सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क। सेक्टर बेस्ड लाइक दोस फ्रेमवर्क्स, हर एक इंडस्ट्री दे नीड अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। द वन विच इज लाइक फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री, इफ यू आर मेकिंग अ एआई प्रोडक्ट, तो उसका एक अलग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होगा, प्रोसेस। देन द हेल्थ केयर और द फिनेंस, ओके, बिकॉज ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट. Then there is a framework based on the value based. So here we uh, consider the moral values and philosophy. So if we are doing even in education or finance, so should we allow certain kind of things in this in healthcare? The patient should know about these certain things or should not be. So all these things can be considered in a value based framework. So sector based is basically about a particular sectors we have done.
So, for example, in healthcare sector, we have a patient privacy, data security, and ethical use of AI in medical decision making. So, this is the all the sector-based framework is there. Then we have in sector-based framework is applied to finance, education. There are a lot many are there. Few are written here. तो आप ये इसको देख सकते हैं. The next is the value based. So value based is on moral values and philosophy. So here basically we have in value based we have three types of things which we have to see. One is right based. Rights means every human has a dignity and equality. Utility, we have to see that that particular solution maximize the overall benefit. Keyword is benefit. Then virtue based. Virtue based is basically focus on honesty and integrity. Okay, so it should be compassion and all these human values should be there. It is not that machine is doing irrespective of compassion. Okay, if somebody is more sicker than the other person, so he should give priority to the more sicker person than the others. So this kind of things can be integrated or involved in the value based. So bioethics framework is basically one framework is there which is for health. So here basically we have four main principles are there. First is respect for autonomy. People should make informed decision, right? So they before they do anything, they know what kind of decisions they are. They should be informed about it. Do not harm. Avoid causing non-maleficence. Is the framework should not harm them in any case. Okay, research is in the name of research. Many times, many medicines are given to the patients which are may not be at the research stage. They are not fully approved. So this should not be done without their information, and it should not harm them. Then ensure maximum beneficence means everybody should work for all, they should benefit others. And justice is basically what treat everyone fairly regard of people's background, religion, or economic conditions and all this. So this should be in bioethics framework. Now, case study of AI healthcare. So one example is there in a predict a high risk patient was biased against a region. Now, sometime a high risk patient was biased about a certain regions are given more priority. Why this thing happened? Because it was trained on a data reflecting on spending pattern, not on health. हो सकते हैं there are poor people जो गरीब है वो उतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहे हेल्थ के ऊपर बट दे आर मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स सो जो हेल्थ के लिए जो कर रहे हैं स्पेंडिंग कर रहे हैं दैट इज नॉट अ करेक्ट इंडिकेटर दैट दोज आर द हाई रिस्क पेशेंट. Okay, so autonomy, we need to be transparent about AI decision making. That what is AI is taking decision based on these conditions or criteria. Avoid biased training data. एक तरह का data, the data should be not be biased. Beneficiaries use better data set to improve patient care. Justice, equal healthcare access to all groups, right? And so the key points are again the ensure structured approach, domains, how different data type, ethical framework, why we need it to keep AI in there, and bioethic ensure AI in healthcare respects human rights and welfare. So here we come to end of this one. Now, if you want, there is a quiz test for this one, which you can. There are 50 questions are there. Further, there is a on the same topic. This this facilitator book is there where question answer is given. तो उसके क्वेश्चन आंसर्स भी है आप जो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं. तो all question answers or solutions are given. Okay, in addition, question bank is also given as per the syllabus like project question bank for these things. So here also there are questions are given for further revision. Okay, so I think uh, the time is very limited. So you should not wait for that last day before exam preparation. आप अभी से इसको prepare कीजिए and it's a once you understand this is a very simple it's not very complicated because आप में उतना in depth
understanding is not that much required than the basic understanding. If you go through it properly, you can easily score very good marks. So you should think of purchasing this course and completing all the content, going through the content properly. एक बारी आप जानेंगे तो you will be finding it very easy to score or that attempt the paper. So in the next video, I will be taking one more chapter and I will discuss the important content. Okay. So here we come to the end. See you in the next video.